Okay. So dear students, we have learned that we are going to do the finalization of account for such a kind of business or proprietor or owner who keep their records on single entry system. Single entry system means they have just recorded randomly what he has paid or kind of rough record of their books of account. Now, we being the expert person in the profession of accounting and finance, it's our job to tally their balance sheet. So there are two ways. One way, what we have learned from FIBC till now, everything needs to be journalized, and again those journals to be shifted into ledger, those ledgers to be shifted into trial balance, those trial balance and few adjustment needs to uh, circulated for finalization process, trading P&L and balance sheet, and finally my closing balance sheet to file. Am I right? The other way, what we are going to learn today, I mean, which we have already started learning in this semester, which is known as accounting for incomplete record or single entry system. Okay. So here, what we will do, we will prepare certain ledger which is mandatory to be prepared. I mean, opening balance sheet, trading profit and loss, closing. These are mandatory to prepare. Remaining other ledgers also we need to prepare, provided we have their data, say for example, debtors, creditors, bills payable, bills receivable. If there are adjustments, we need to prepare even fixed asset account or other accounts as well. Okay. So Aditya 7163, kindly mute yourself. Who's the 7163? Here I'm not getting option. Okay. We'll be taking small question first. Yes, student. We'll be doing this question. And I need your attention. Now, these, as I told you, what will be given in the question? In the question, they'll give you the opening and closing balances of assets and liabilities. What they expect you to prepare, trading profit and loss, and balance sheet. Am I right? Okay, to get this trading profit and loss and balance sheet, we need to put our efforts. We need to prepare opening balance sheet, we need to prepare data and other ledgers if required. So we have opening balances of assets and liabilities. We just printographical error. Actually, furniture is 10,000, stock is 6,000, data is 12,000, prepaid expenses is nil, creditors is 4,000, unpaid expenses are 1,200 and cash is 2,200. So, it is just a printographical thing which has been come down. Otherwise, all items are there. Some items opening balances is made. Some items they have asked us to get the closing balance. Accordingly, we will do. So we need to prepare debtors ledger, creditors ledger. We need to prepare opening balance sheet, trading profit and loss, and closing balance sheet. These are the
Transaction for the year, receipts and payments are given. So receipt from debtors, we need to pass the entry. What will be the entry for receipts and receipt from debtors? So we will do literally double entry system for everything. So we'll post them into opening balance sheet as well as corresponding ledger account, closing balance sheet, and and their corresponding ledger account. So for that you need to know. Suppose if there is a debit balance, so that will be reflected in the opening balance sheet, opening balances of debit side of those ledgers. Closing, just reverse as we have done as a fundamental of ledger posting in your FIDC and FIDC. It goes just reverse to the journal. Okay? Then we literally going to pass these journal entries and we post them to the respective ledger. And then finally, we will take up these adjustments. We'll give the adjustment effect, and finally, my balance sheet of the proprietor or owner to whom we are making an account is going to tally. Okay. To start doing this, make a trading profit and loss and closing balance sheet as it's asked in the question. Delete this that we have this means okay. Trading account is of around 6 to 7 lines. P&L account is around 10 lines. चलो बनाना चालू करो फटाफट. Closing balance sheet is also of 10 lines. And now these are the working. Opening balance sheet of 6 to 7 lines. Another ledger, cash bank, debtors and creditors. In the books of Ram Prakash is the proprietor's name. सर हाँ बोलो. सर इसका क्वेश्चन का क्या करेंगे? क्वेश्चन ले लो ना. ठीक है क्वेश्चन है. सर इस डायरेक्टली बना देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन. ये छोटे क्वेश्चन है बिकॉज अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन इज वेरी लेंथी क्वेश्चन. तो डायरेक्टली उस टाइप के क्वेश्चन पे जाओगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द स्मॉल क्वेश्चन फर्स्ट. ओके सर, थैंक यू सर. या मैंने यहाँ पे है सेकंड पेज. हाँ सर.
फॉर्मेट बनाओ फटाफट. Done, sir. What about other students? कैश डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी बनाया. Yes, sir, done. जल्दी जल्दी No, sir. दो. मुझे पता है. कैश डेटर्स क्रेडिटर्स ये तीन लेजर भी बना. That will be of 10 lines. Debtors and creditors will be of 6 to 8 lines. Okay, Vita, can we start now? Okay. So now we'll first step is done. What we did all the formatting, we made this ledger which are required. Now step two, we'll take up these balances to the respective
ledger account and corresponding balance sheet. Opening balance will come in opening balance sheet. Closing balances will come in closing balance sheet likewise. So furniture where need to be reflected? कहाँ आएगा बताओ? Balance is there So on. opening asset and closing asset. हाँ. But इसके दो इफेक्ट होंगे. Say for example, इन्होंने जो बोला वो सही है. First, let me put it in opening balance sheet. Whereas closing balance is not 10,000. Okay. If we will prepare furniture ledger also, suppose यहाँ पे हमने ledger बनाया, ठीक है? Opening balance कहाँ लिखूंगा? So debit side. Asset will be on the debit side. Please brought down. At 10,000. Okay. By balance carry down. Closing balance भी है ना? कितना है? 300 है आपके पास 12,000. तो 2,000 कहाँ से आ रहेगा? Sir purchase हुआ होगा. परचेज किया रहेगा हमने. ठीक है, हम लिखेंगे. और परचेज किया रहेगा तो क्या एंट्री आएगा वो हम देखेंगे. क्लोजिंग बैलेंसेस हम यहाँ लिख देते हैं. यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है. अब डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी वही इफेक्ट आएगा, है ना? अब डायरेक्ट 12,000 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं परचेज का एंट्री बताता हूँ क्या करेंगे. रादर ये हटा ही दो, तो कंफ्यूजन होगा. तुमको ऐसे सीखना चाहिए. क्लोजिंग बैलेंस इन द क्लोजिंग बैलेंस, है ना? एंड क्लोजिंग साइड ऑफ लेजर अकाउंट. ठीक है, क्लियर है आप लोग सबको? नेक्स्ट, लिटरली हर एक का दो इफेक्ट देंगे. स्टॉक ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट. यस, Sir trading में जाएगा. हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग दोनों जगह जाएगा. ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा. ओपनिंग स्टॉक हर एक के हम लोग दो इफेक्ट लिखेंगे. वाई? फ्रॉम सिंगल एंट्री वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम. ओके, अंडरस्टूड ध्रुव एंड एचवी? Yes, sir. क्यों पूछा? बिकॉज आपके 2-3 बच्चों के वीडियो ऑन है, बाकी मेरे पास अपडेट ही नहीं, तो मैं कैसे उनसे सीख सकता. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट यू एचवी? Yes, sir, it is clear. ओके, नेक्स्ट. क्लोजिंग 2,000. It will go to the closing balance sheet. $2,000 and trading account 2,000. Clear? Next, debtors, same opening balance sheet and debtors ledger.
to balance as we did for furniture. Same thing we'll do here also. है ना? Opening balance sheet and debtors ledger, debit balance. Closing balance 14,000. Closing balance sheet and debtors ledger. By balance करेगा. ठीक है? Next, prepaid expense. Opening is nil, तो कुछ नहीं लिखेंगे. Closing is 4,000. तो prepaid expense अगर closing रहेगा तो क्या करोगे? Less from expense. Yes or no? So closing balance is prepaid expense. Outstanding add करते हो. Prepaid क्या होगा? Minus होगा. Second effect, less from expense. है ना? Yes, sir. Next, हर एक के हम लोग दो इफेक्ट देंगे. Next, creditors 4,000. Opening balance sheet creditors. And creditors ledger में किधर आएगा? Liability है. Where it will be reflected? Asset का तो debit balance. Liability रहेगा तो So credit balance. sir. credit balance. So you will find in creditors, it will be credit balance. By balance brought down. Same photo. Next, closing creditors is my question mark. तो दिया नहीं रहेगा, हमको ढूंढना है. ठीक है? Closing creditors, we need to find out. That will be my balancing figure. हमको ढूंढना है. आएगा. That's all we will. Then we'll get the closing credit. Next, unpaid expense. Unpaid म्हणजे outstanding. Unpaid expense कितना है? 1200. 1200. So first we'll come to opening balance sheet. Unpaid मतलब outstanding. अच्छा, ओपनिंग अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा? एक्सपेंसेस Sir, ओपनिंग add Add होगा. क्लोजिंग ऐड होता है. याद करो, एनपी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया था आप लोगों ने. क्लोजिंग का जस्ट रिवर्स इफेक्ट होता है ओपनिंग के लिए. तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहता तो आप ऐड करते थे. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. यस और नो? दैट्स व्हाई वी विल सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंस. हियर इट विल कम सन्ड्री एक्सपेंस आएगा बाद. ठीक है? तो दो इफेक्ट हो गए. 1200 हियर, 1200 हियर सब्सट्रैक्ट. नेक्स्ट, क्लोजिंग 2000. It will come in closing balance sheet. Unpaid. And it will be added. है ना? ये क्या होगा? ये ऐड होगा. अनपेड बोलो या आउटस्टैंडिंग बोलो, सबका मतलब एक ही. ठीक है? नेक्स्ट, कैश 2200. So first effect, opening balance sheet 2200. Subsequent effect, cash ledger to balance brought down 2200.
मेरा बंद कर देना फिर से। Okay. Next, closing cash 600 दिया हुआ है. Cash ledger, closing balance. Not a balance given. And closing balance sheet. ठीक है. Only creditors नहीं दिया जो ढूंढना है अपने. Rest all opening and closing balances का effect we have given. So the opening balance sheet and corresponding ledger account, closing balance sheet and corresponding ledger account. Yes. Just verify. Have you done these four things or not? Your opening balance sheet should have these items: furniture, stock, debtors and cash. सही है. Liability में creditors and unpaid expense. Your trading has opening and closing. P&L has only these adjustments, and closing balance sheet has these items. है ये सारी चीज लिखा है आप लोगों ने. Okay. Then ledgers. Cash ledger has opening closing. Debtors ledger has opening closing. Creditors ledger has opening closing. Furniture has opening closing. Nothing else. Okay. I'll go next. One by one. Receipt from debtors. What will be journal entry? So bank account to debtors. Yes. Cash bank account debit to debtors. देखो यहाँ लिखा है ना? ठीक है. क्वेश्चन क्या होगा? कैश में टू डेटर्स, डेटर्स में बाय कैश. यस और नो? कैश में टू डेटर्स, डेटर्स में बाय कैश. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स 20,000. क्या जर्नल एंट्री आएगा? पेड टू So क्रेडिटर्स, creditors to bank. क्रेडिटर्स टू बैंक. देखो यहाँ लिखा है क्रेडिटर्स टू बैंक. तो क्रेडिटर्स में आएगा टू बैंक, कैश बैंक में क्या आएगा? बाय क्रेडिटर्स. इज दिस क्लियर? Topic is very simple, provided you have the concept, you know the accounting thoroughly, you have conceptually grip. Very simple. Okay. Only we are just excluding the lengthy steps. Next, transportation. Okay. Next is transportation in. Transportation in मतलब क्या होता है बेटा? Carriage inward. Transportation in क्या होता है? Carriage inward. क्या एंट्री होगा अगर कैरेज इनवर्ट करता है? क्या तो आपने Sir carriage inward to cash. कैश. फिर कैरेज इनवर्ट का लेजर बनाएंगे और फिर उसको ट्रांसफर करेंगे इधर ट्रेडिंग में. तो डायरेक्टली वी कैन राइट ट्रेडिंग टू कैश, है कि नहीं? तो ट्रेडिंग में आ जाएगा कैरेज इनवर्ट, और कैश में क्या आ जाएगा? बाय कैरेज, बाय ट्रांसपोर्टेशन. ट्रेडिंग में टू और कैश में बाय. क्लियर है? नेक्स्ट, ड्राइंग. क्या होगा? ड्राइंग टू कैश. ठीक है. तो लेस फ्रॉम कैपिटल, फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस शीट we'll have less drawing. कैश में क्या आएगा? बाय ड्राइंग.
है। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंस, एंट्री आएगा सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश। अगेन लीजर बनाएंगे, उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएनएल में, तो डायरेक्ट पीएनएल में लिख सकता हूँ। ओनली वी आर कीपिंग दीज आइटम्स, दीज स्टेप्स व्हिच वी डिड इन एक्वाइजेशन यस्टरडे। क्यों? हमारे पास उसका टाइम नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। कैश में क्या आएगा, भाई सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज दिया ही है, सर ये एडजस्टमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बोलिए। सॉरी सर, सर सन्ड्री एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट कहाँ हो रहा है? कैश में, इसे ना, कैश में। ओके सर। अभी तुमको देखो इसमें दिया हुआ एडजस्ट, आई मीन ये एडजस्टमेंट है भी नहीं, फर्नीचर परचेज दिया हुआ है। क्या एंट्री पास करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। यस सर। फर्नीचर में लिखेगा टू कैश में क्या इफेक्ट आएगा, बाय फर्नीचर 2000 है। ये सारे इफेक्ट हो गए, ये नो, सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवर। नाउ दे हैव गिवन क्रेडिट परचेज 23,000। क्या आएगा, ट्रेडिंग टू क्रेडिटर्स, डायरेक्टली पास कर देते, ट्रेडिंग टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में क्या आएगा, बाय ट्रेडिंग, बाय क्रेडिट परचेज 23, है ना। लास्ट RDD 10% from debtors. What you need to do, less from debtors, RDD to debtors rather. अब क्या इफेक्ट देंगे, RDD to debtors 10%। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, पीएनएल में, टू RDD। अब देखो ये सारी चीजें आ गई, क्योंकि और कुछ नहीं है आपके क्वेश्चन में, है ना। ये भी ले लिया मैंने एडजस्टमेंट। तो ऑल 5 स्टेप्स आर ओवर। और 6 स्टेप, क्लोजिंग ऑल लेजर्स, ट्रांसफर द बैलेंस इनटू ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट और इन पीएनएल, क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट, ट्रांसफर द बैलेंस इनटू क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर द बैलेंस इनटू पीएनएल, क्लोज पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर द बैलेंस इनटू क्लोजिंग बैलेंस शीट, व्हिच मस्ट टैली। यस और नो, क्लोज करते जाओ, मुझे बैलेंस बताते जाओ। फर्स्ट यू क्लोज दिस into अकाउंट, ओके, इसको क्लोज करो, इट विल टैली। पता है क्या कुछ फर्नीचर में, नहीं ना, ठीक है। क्लोज क्रेडिटर्स, देखो कितना आ रहा है, आई थिंक क्रेडिट इज मोर, 27 है ना, और ये कितना है, 27,000 का डिफरेंस है ना। यहाँ तो 27 ही आएगा, 7,000 क्या आएगा,
closing creditors, which was asked in question. Immediately, I will transfer closing creditors where? In closing balance sheet. We are on the sixth step. ठीक है? Creditors close हो गया, furniture close हो गया, debtor को close करो. 56 and 12 है ना? तो 56 है, ये 12 है. बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा बताओ? Sir, 44,000. क्या आएगा वो? 44 को क्या मानोगे? Sir, वो credit sales. Absolutely right. That will be credit sale. That will be my credit sale. Where to transfer? Sir, trading account. Absolutely right. Trading account. Similarly, I will close cash account. कितना टोटल देखो? 50 to 600. In credit is more, 50 to 600. Debit is less, 40 to 200 ना? 44 200. Debit 52 ही आएगा. Again, there is a balancing figure on the debit side. क्या हुआ रहेगा बताओ? Sir, cash sales. Absolutely right. Cash sales. That is my balancing figure. $8,400. I put it here. सही है? So we had closed all these ledgers. We have transferred their balances. Now finally I will close opening balance sheet. ये कौन सा balance sheet है? ये opening है ना? Yes. Of last year. ठीक है? ये closing है. Close your opening balance sheet. 32 to 30,200. Debit is only 5,200. What is the balance? 25,000. Yes, sir. 25. What we will take it as? Capital. Yes, opening capital. This is nothing but opening capital. I'll take it there in the closing balance sheet. Opening capital as 25,000. है ना? समझ में आ रहा है कैसे कैसे स्लोली क्लोज करना है, करस्पॉन्डिंग लेजर में ट्रांसफर करना है बैलेंसेस को, राइट? मेरा फाइनल लेजर क्या है? ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट. इतने में ही लेके जाने वाले. हो गया. नाउ आई विल क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट इज मोर, डेबिट इज लेस. 33 आ रहा है देखो, है ना? तो क्या आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट? कितना? Sir, 21,400. 400. 21,400. That is nothing but that will transfer where? In PNL. ठीक है ना? तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? कैरी डाउन. ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ब्रॉट डाउन. गेट मी द नेट प्रॉफिट.
Sir, 5,600. मैम मैं लेक्चर में हूँ, 5 मिनट में फोन करता हूँ लेक्चर खत्म होने के बाद। How much it is coming, sir? Sir, 5,600. That's my net profit. है ना? तो क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल को ऐड होगा, yes or no? Yes, sir. तो फाइनली कैपिटल बताओ कितना आ रहा है? $25 minus Sir, 12 plus 18,600. 5,600. Sorry, 18,600. 18,600. Sir, tallied at 27,600. These are the liabilities and assets. Huh? Okay. Yes, let me see whether it is telling or not. Sir, tallied. 27. देखो, very simple. Why tallied? Because for each and every transaction we have given double entry. That's why finally my asset is equal to liability. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So kindly do the practice of similar question with your own. खुद से solve करो. देखो tally होता है क्या? And we'll do few more practice in the same topic. Till then, be at home, be safe, take care of yourself, take care of your family members. Bye. Should I wind up? सबने लिख लिया, नहीं चाहिए तो Sir, can you show the sundry debtors account? Sorry. what you want? Sir, sundry debtors account, can you please show that? Okay, one by one. So let me first take you to the trading P&L account. Screenshot लेके रख लो. Then opening and closing लिया आप लोगों ने. Yes, sir. Then opening and closing balance sheet. अगर practice करना है, I will check all this assignment. ठीक है? Cash and debtors. Creditors and furnitures. Over. Yes, sir, thank you. Thank you, everyone. See you in next lecture.